โดยคาดว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในเวลา 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ 10 นาฬิกา 30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะโดยหลังจากหารือกับนักธุรกิจของไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็จะเดินทางไปยังลานหน้าราชปฏิภาวันค่ะเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยจะเดินตรวจแถวทหารอินเดียนะคะจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็มีกำหนดเข้าเคารพนางปฏิภาปาทิวประธานาธิบดีอินเดียนายมานโมฮันซิงนายกรัฐมนตรีอินเดียนางโซเนียคานทีประธานพรรคร่วมรัฐบาลตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินที่ TG 8834มายังท่าอากาศยานกองทัพอากาศปาลามกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้นะคะก่อนเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินอินเดียแอร์ไปยังเมืองอักราเพื่อเยี่ยมชมทัชมาฮาลค่ะโดยวัตถุประสงค์ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางเยือนประเทศอินเดียในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วยังเป็นการเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะทางการของอินเดียก็จะเชิญผู้นำของแต่ละประเทศครั้งละ1คนนะคะปีละ1คนเข้ามาร่วมงานนี้ส่วนในปีนี้ก็เป็นการเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยபோலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு செல்லும் பாதையில் உள்ள விஜய் சவுக், ராஜ்பத், இந்தியா கேட், திலக் மார்க், பகதூர் ஷா, ஜஃபார் பார்க், நேதாஜி சுபாஷ் மார்க் ஆகிய இடங்கள் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அணிவகுப்பு செல்லும் இடங்களில் அமைந்துள்ள கட்டடங்களின் மாடிகளிலும் போலீசார் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். குடியரசு தின விழா நடைபெறும் டெல்லி செங்கோட்டையிலும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக குடியரசு தின அணிவகுப்பு நடைபெறும் பாதையில் 12 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே வாகனங்கள் செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்பதற்காக தாய்லாந்து பிரதமர் இங்லக் சினாவாத்ரா டெல்லி வந்துள்ளார். அவரை பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர். I think this is very impressed for the warm welcome of the hospitality, and also this is a great honor for us to join the Republic Day as the state guest stage. So I think this is the thing that we willing to. This is the first state for Thailand and India to be started as the strategic level. மேலும் இந்தியாவுடனான நல்லுறவை மேம்படுத்துவதாக தமது வருகை அமைந்துள்ளதாக தாய்லாந்து பிரதமர் இங்லக் சினாவாத்ரா கூறினார். குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதியில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க கூடுதல் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். Srimati Pratibha Devi Singh Patil, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay-coloured mounts. Raised in 1773, the President's Bodyguards is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. This is a society where every citizen would have an opportunity to fulfill one's destiny as well as to give shape and expression to what is best within. Andhra Pradesh has been at the forefront of nation building. Well-being of its citizens is a prime concern of the government. This entails carrying out a number of development and welfare measures. The current year is marked by the vagaries of monsoon with deficient rainfall and resultant drought conditions across most parts of the state, leading to declaration of 876 mandals as drought affected. My government is alive to the travails of the farmer and the adversities faced by the farm sector. I pay my tribute to the indomitable will as well as resilience of our farming community who have had to cope with agricultural operations under unfavorable seasonal conditions. A slew of measures have already been taken up to offer relief to the farm sector. With focus on agriculture,
my government has organized Raitu Chaitanya Yatras during May-June 2011 with a view to rejuvenate agriculture at the grassroots level by bringing to the doorstep of farmers improved farm practices and sustainable innovations. In this mass contact program, over 2 million farmers could be touched. A record number of 3.37 lakh samples were collected and sent to soil testing laboratories to suggest prescriptive improvements for their benefit. The Raitu Sadasulu, showcasing the whole gamut of government initiatives, were held during June 2011 all over the state, bringing together agriculture scientists and researchers, extension staff and the farmers face to face, which is a two-way learning process and proved to be hugely successful. My government has decided to settle various problems faced by the people relating to land ownership, title deeds, etc., and will conduct has started from 18th January and will be held up to 17th of March. Revenue teams will cover all revenue villages, including the hamlets in the state, numbering about 60,000 to attend to outstanding land disputes. A large number of people will be benefited through this program. Providing quality seed in a timely manner has been the mainstay of my government. My government has supplied 17.09 lakh quintals of quality seed on 50% subsidy to the small and marginal farmers, amounting to rupees 231 crores. The requirement of fertilizer has been addressed adequately during Rabi 2011-12 through proactive and timely measures. My government is committed to ensure adequate and timely credit support to farmers. During 2011-12, agricultural loans totaling nearly rupees 37,000 crores have been disbursed. Rupees 75 crores has been earmarked towards the Pavla Vaddi scheme, a flagship program. I am proud to state that Andhra Pradesh is the first state in the country to have enacted the Andhra Pradesh Land Licensed Cultivators Act 2011. This act aims to provide loans and other benefits to the large sections of licensed cultivators by issuing loan eligibility cards. During 2011-12, 1.8 lakh licensed cultivators have been given a total loan amount of rupees 380 crores. Crop insurance scheme is operational in all the 22 districts of the state, with village as a unit. More than 60 lakh farmers stood to benefit availing insurance claims. To encourage and support farmers, my government recently launched a new scheme to provide interest-free crop loans up to rupees 1 lakh to farmers upon prompt repayment of Rabi 2011 loans. This progressive measure is expected to benefit nearly 95 lakh farmers. My government has taken a promotion of Sri cultivation in a big way by providing the necessary infrastructure with 50% subsidy in all the districts to cover the target area of 3.50 lakh hectares. Effective monitoring and regulation of prices of essential commodities and turning up the public distribution system had the desired impact to ease the price pressure. The food inflation, which had touched the double-digit mark all over the country, has shown a decelerating trend. This trend is expected to continue in the Excellency, the President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, the President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, arriving here at the saluting base, accompanied by our Honorable Chief Guest, Ms. Yingluck Shinawatra, the Prime Minister of Thailand. Our honoured guest, Ms. Yingluck Shinawatra, is the youngest and first ever Lady Prime Minister of Thailand. The three chiefs greeting her. She's a successful entrepreneur, Ms. Shinawatra, and has had a distinguished corporate career too. And of course, India and Thailand are connected by close bonds of history, geography and culture.
It's a proud moment for Indian and Thailand ties today too. महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ है 63वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रीमती यिंगलक शिनावात्रा। भारत और थाईलैंड में गहरे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की कई समानताओं की झलक थाईलैंड के दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। थाई भाषा में शामिल हैं संस्कृत और पाली भाषा के कुछ शब्द। श्रीमती शिनावात्रा के कॉरपोरेट अनुभव शानदार रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद राजपथ पर गुजरेगी भव्य परेड और महामहिम राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। आन बान शान के साथ जनगण मन का सम्मान। What a wonderful display of balance, control. Seeing that fabulous pictures there, and that in fact is the chief guest, the Thailand Prime Minister, the youngest Prime Minister Thailand has had, and the first woman Prime Minister of Thailand who's the chief guest. General, we know the armed forces of people in uniform are known in fact for their precision and discipline, but that display that we saw there must have required, I don't know how much of practice. Indeed. Actually, this motorcycle... Russia slug! राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित और And right behind them, the Railway Protection Force marching contingent, the smartly attired 144 personnel, being led by Assistant Security Commissioner Senthil Kumarasan. राष्ट्रपति पदक 44 अग्निशुभा पदक इत्यादि शामिल हैं और उसके पीछे सफेद और काले रंग की पोशाकों में बढ़ता हुआ सलामी की ओर दिल्ली पुलिस का बैंड जो श्री दर्शक नेतृत्व में बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम महाजन And proudly playing the Delhi Police song. This is the Delhi Police band. Bandmaster Sub-Inspector Purushottam Bahadur is leading this band comprising 68 personnel. Behind their band, the Delhi Police marching contingent. Assistant Commissioner of Police Gaurav Sharma is leading this contingent. Its motto is Delhi Police is always with you and for you. All members of the 148-strong contingent are above 6 feet tall. In keeping with their tradition, they carry .303 rifles with bayonets on their shoulders.
This contingent has the distinction of participating in the Republic Day parade ever since India became a republic in 1950. सलामी मंच की तरफ अब बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दस्ते। सबसे आगे मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का बैंड राजस्थान निदेशालय की अंडर ऑफिसर सावी छात्रा की अगुवाई में बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की 49 छात्राएं सारे जहां से अच्छा की धुन बजाती हुई। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना। की झांकी देश में मतदाताओं के नामांकन को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। लोकतंत्र को जितवाए, मत बोलो मतदान दिवस, लोकतंत्र को जितवाए। मतदान के माध्यम से अब हम मातृभूमि के काम आए, मात्र एक मत भी दे सकता है संस्कार एक, मात्र एक मत भी दे सकता है संस्कार एक। मतदान ही चुन सकता है जनहित में सरकार ने, मतदान ही चुन सकता है जनहित में सरकार ने। मतदान के माध्यम से अब हम मातृभूमि के काम आए, मतदान के माध्यम से अब हम मातृभूमि के काम आए। मतदान के लिए तैयार हुए हम 18 साल के होते ही मतदाता हम भी हुए। From the Ministry of Finance with the theme Indian Customs, a proactive force to guard our economic frontiers. The Indian Customs is the guardian of our economic frontiers. जो सपने सभी बनाए हमने अपने, फिर एक सपना है साकार, शिक्षा अब मौलिक अधिकार। हम कामयाब थे, हम कामयाब हैं, हम कामयाब रहेंगे, हम कामयाब थे, हम कामयाब हैं, हम कामयाब
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। From spiritual chanting to God's own country. That's the next tableau from Kerala. Their theme, Pakarnattam. Pakarnattam is a modern formulation combining two classical performing arts of Kerala, Kathakali and Mohiniyattam. Takkinnam tagadarigiда daga dikkinnam tagadarigiда daga Takkinnam tagadarigiда daga dikkinnam tagadarigiда daga Takida takum da tikida takum da And now, the tableau from Karnataka, depicting Bidri ware. Bidri ware, one of the most intricate, exquisite, delicate and exotic handicrafts of India, from Bidar in North Karnataka. Rare, intricate, unique designs make Bidri ware the most coveted of handicraft products throughout the world. साफा, कलकी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता बड़ा ही खूबसूरत है। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कोसों दूर तक फैला कच्छ का रण, हर विषम परिस्थिति में ऊंट इन इलाकों की सुरक्षा और चौकसी में सीमा प्रहरियों का सच्चा साथी है। अपने पूरे ऊंट दस्ते के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति सजा काफिलाए ऊंट अपनी मस्तिष्क में कहां चल पड़ा। ग्रैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर फुलाराम राणा की अगुवाई में सलामी मंच पर अब दस्तक दे रहा है ऊंट दस्ता बैंड बजाता हुआ हम है सीमा सुरक्षा बल। इस धुन को बजाता हुआ विश्व में अपने किस्म के एकमात्र ऊंट बैंड में, जहां पर पुरानी रवायती साज में वहीं पर मॉडर्न साजों का खूबसूरत अंदाज भी।
चमन में खिले जाते हैं कि वो आते हैं, उंगलियां सर उठाते हैं कि वो आते हैं। लोक निर्माण विभाग की And floating down Rajpath, this beautiful pictorial fantasy woven with I'm sure the temptation is very strong to reach out and adopt one of those baby cubs on the tree there, but that would be disastrous. देखा आपने इन बागों को, आपदा कभी भी कहीं भी आ सकती है, अब चाहे वो प्राकृतिक। And talking of disasters, the next tableau is from the National Disaster Management Authority, the NDMA, and their tableau depicts the paradigm shift in disaster management. From a relief-centric regime, the focus is now on strengthening pre-disaster preparedness.ภารกิจวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐอินเดียนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำต่างชาติหนึ่งเดียวที่รัฐบาลอินเดียเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาอิสรภาพของสาธารณรัฐอินเดียหรือวันชาติอินเดียเข้าสู่ปีที่ 63 บนถนนราชพฤกษ์ใจกลางกรุงนิวเดลีโดยตลอดเส้นทางการจัดงานมีการประดับธงไทยคู่กับธงชาติสาธารณรัฐอินเดียในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติได้มีการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพแห่งสาธารณรัฐอินเดียตลอดจนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วสาธารณรัฐอินเดียได้รับชมพิธีที่ยิ่งใหญ่สมเกียรตินี้ด้วยก่อนที่ในช่วงเย็นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองอีกครั้งจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมไทยแลนด์เพื่อนำไปปรับนโยบายเพิ่มแนวทางต่อยอดความสำเร็จของการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าการเยือนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามหลังได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างกันถึง6ฉบับซึ่งเป็นกรอบนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทยอินเดียที่มีเป้าหมายขยายการลงทุนสูงถึง 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ไทยยังเสนอเป็นประตูทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงอินเดียกับภูมิภาคอาเซียนผ่านเวทีความร่วมมือต่างๆพร้อมกับพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงทะเลระหว่างอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียผ่านทางท่าเรือน้ำลึกทวายด้วยครั้งนี้เราได้รับความประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าทางอินเดียก็ให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดที่ให้ถือว่าเป็นในขั้นตอนของการทูตก็คือว่าตำแหน่ง Chief Guest ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในเชิงการทูตที่ให้เพื่อเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียนะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่ดิฉันมาอินเดียก็ได้มีการเจรจากับทางด้านของทวิภาคีก็เป็นไปได้ความคืบหน้าค่อนข้างดีซึ่งเราก็จะมีตั้งคณะทำงานในการจะติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่เร่งรัดในเรื่องของ FTA เพื่อที่จะให้การค้าการขายระหว่างประเทศไทยกับอินเดียนั้นเติบโตมากขึ้นค่ะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่อินเดียในช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางจากสาธารณรัฐอินเดียไปยังเมืองดาวอสนครซูริกสมาพันธรัฐสวิตเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคมนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน